Greetings, students, and welcome back to your English class. Now, we will continue with the chapter The Ailing Planet, the Green Movement's Role. Okay, and who had written it? Nani Palkiwala. So, children, who had written it? Nani Palkiwala. Okay, now we will continue from the page number 44. Okay, last paragraph. Okay, children, let us continue. Now, children, before this, what we had studied about the green movement's role touches upon so many things related to ecology and the environment, and the fact that makes it one of the best articles of the time is its relevance even after almost 3 decades of its first publication. Its impact on the mind of the readers and the futuristic view of the writer Nani Palkiwala. Okay, now let us continue from where? From here. See, Mr. Lester R. Brown. Okay, children, let us continue. Now it says Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect. Okay, now children, what did he actually explain? Okay. It points out that Earth's principal biological systems are four: fishery, forest, grassland, and cropland. Now, जो मिस्टर लेस्टर थे चिल्ड्रन उनके चार there are four biological systems that form the foundation of global economic system according to the book by Leslie R. Brown. Okay, Lester आर ब्राउन ने चार प्रिंसिपल निकाले थे और वो चार प्रिंसिपल बायोलॉजिकल प्रिंसिपल या बायोलॉजिकल सिस्टम क्या थे? फिशरी, फिशेस, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन. और उन्होंने क्या करा है? दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक and they form the foundation of global economic system. Okay, now here foundation, base, principal, main. कहाँ पर है ये? Here I'll show you. Wait. Here we have foundation is base, B-A-S-E, base. Okay, and principal is the main, M-A-I-N. Okay, now the main biological system, चार system होते थे: fishery, forest, grassland and croplands. They form the biological economic system. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. Now उसने क्या बोला है children? In addition, वो क्या बोला है? These four systems provide food and raw material for industries. ठीक है, ये जो चारों बायोलॉजिकल सिस्टम है ये क्या प्रोवाइड करते हैं? They provide food and raw material for the industry. That means they are the primary source, सबसे basic source है, which is connected with nature. ठीक है, जैसे फिशरी हो गया, ग्रासलैंड हो गया, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. किस चीज़ के लिए? इंडस्ट्रीज़ के लिए. अलावा मिनरल्स, और किसके अलावा? मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव सिंथेटिक्स के अलावा. In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. ठीक है, now synthetics. Wait, synthetics here. What is the meaning? Artificial substance. What is the meaning? Artificial subsistence. Okay. This is the meaning of synthetics. Now, in large areas of the world, okay, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is impaired. Impaired, weak. Impaired, here, impaired means weak, W-E-A-K. Okay, impaired means weak. Now what are these
they are saying that these systems have reached an unsustainable point. ये जो सारे सिस्टम हैं, ये चारों के सिस्टम जो हैं, ये एक क्या है, अनसस्टेनेबल पॉइंट पर रीच कर गए, where their productivity are weak. ठीक है. Then it talks about when this happens, fishery collapses, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands, and crops deteriorate. उसने सिंपल एक बोला है कि when this happens, जब हम इनको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं, ठीक है, अनसस्टेनेबल लेवल तक यूज़ करते करते रहते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये जो एक अनसस्टेनेबल लेवल, जो सस्टेनेबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, ये उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं. व्हेन दिस हैपन, और जब ऐसा होना शुरू हो जाता है, तो फिशरीज कोलैप्स, फिशरीज क्या हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती. द फॉरेस्ट विल स्लोली डिसअपियर, फॉरेस्ट की जगह बहुत सारी बिल्डिंग्स बन जाती हैं. ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन लैंड्स. ठीक है, बैरन वेस्टलैंड्स क्या कहा है, बैरन वेस्टलैंड्स का मतलब बेयरली इनहैबिटेंट्स पीस ऑफ लैंड. ठीक है, बेयरली इनहैबिटेंट्स पीस ऑफ लैंड कहाँ पर है, बैरन वेस्टलैंड्स. ठीक है, तो दैट इज बेयरली inhabitants piece of land. Okay, piece of land, this is the meaning. Okay children, and croplands deteriorate, become progressively worse. ठीक है, कहाँ पर है ये वर्ड, ये यहाँ पर है. deteriorate means become progressively वर्स. ठीक है, तो उसने सिंपल क्या बोला है चिल्ड्रन, दैट these system have reached an unsustainable point where their productivity has impaired, weak. With these, fisheries will collapse, the forest will slowly disappear, grasslands will turn into barren wasteland, and croplands will become deteriorate or weak. Okay, in a protein conscious and protein hungry world, our fishing is common every day. तो उसने बोला है अब लोग कहाँ हैं, प्रोटीन कॉन्शियस होने लग गए. प्रोटीन कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करना शुरू कर दिया गया है, किसने, लोगों ने. तो हमारी क्या है, फिशेस को इस चीज़ में मारा जाता है, ताकि क्योंकि क्या हमें फिशेस से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है. In poor countries, low forests are being decimated to reduce in number, in order to procure firewood or cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinct as a result of destruction. Now, overfishing. It is like overfishing is very common nowadays, where people are becoming cautious. ठीक है, यहाँ तक कर दिया. In poor countries, forests are being cut down on a large scale to obtain wood for cooking. ठीक है, क्योंकि वो पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, केरोसिन बहुत ज़्यादा महंगी होगी, गैसेस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है. तो क्या लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, ताकि वो क्या करें, कुकिंग कर सकें. और ये क्या बोला है, व्हाट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर व्हाट गोज़ इनसाइड द पॉट. नाउ इमेजिन दिस इज़ दी व्हाट डू यू कॉल इट, दिस इज़ द फायरवुड. तो यहाँ पर फायर है, तो इसके ऊपर पॉट रखा गया है. ठीक है, नाउ व्हाट गोज़ इनसाइड द पॉट, दैट मीन्स food cost less than the firewood. इसका मतलब यही है. ओके, समझ में आ गया. देन since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, उसने क्या बोला, इवॉल्व करना. जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है बहुत घने हैं अभी, ठीक है, दे इवॉल्व, राइट.
Several species of life face extinction as a result of its destruction. और हमने इन फॉरेस्ट को, जो कि हमारे इवॉल्व होते हैं, जो हमारी एवोल्यूशन पे ध्यान देते हैं, तो हमने इनको क्या कर दिया, इतना ज़्यादा काट दिया है कि ये लोग ये क्या हो गए, ख़त्म होने के कगार पर है। सारी की सारी जो स्पीशीज़ हैं चिल्ड्रन, वो क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. It has been well said that forests precede mankind. Okay, it has been well said that forests precede mankind, and deserts follow. Precede means come before in order or position. That means it has been well said that forests precede mankind. ठीक है, precede मतलब come before in order or positions, and deserts follow. ठीक है. The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. Now क्या बोल रहे हैं? It has been well said that forest precedes mankind. Precede का मतलब होता है come before, come before in order or position. ठीक है. Now the world's Asian patrimony, property inherited from forefathers. ठीक है, patrimony, property inherited from forefathers. ठीक है, of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. तो ये जो हमारी, जो हमें फोरफादर्स से क्या मिली है चिल्ड्रन, जो हमें ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिला है, ये क्या कर रहा है, ये इरोड हो रहा है. ठीक है, कितने परसेंट पे, 40 to 50 million acres, eroding at the rate of 40 to 50 years, and the growing use of cow dung for burning deprives the soil of an important. अब जो सॉइल है वो, उसको नेचुरल मेन्योर या नेचुरल फर्टिलाइजर क्या होगा, गोबर, काउ डंग मिलेगा, राइट. बट अब हम उस गाव टंग को क्या किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, बर्निंग के उसमें. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डिप्राइव कर रहा है. ठीक है, सॉइल को क्या करने में, फर्टाइल होने में. तो डिप्राइव मीन्स प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम यूजिंग समथिंग. ओके, डिप्राइव्स द सॉइल. The World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of forest planning is needed. वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि, सॉरी चिल्ड्रन, वर्ल्ड बैंक ने क्या एस्टिमेट किया है, वर्ल्ड बैंक ने क्या एस्टिमेट किया है चिल्ड्रन, ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप अप विद द एक्सपेक्ट. हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा, 5-fold, 5 गुना ज़्यादा हमें फॉरेस्ट क्या करने हैं, प्लांट करने हैं ना. ठीक है चिल्ड्रन, नाउ इट इज़ एक फॉरेस्ट एंड डेजर्ट कम इन ऑर्डर टू बिकम अ कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग. फॉरेस्ट एंड जो डेजर्ट्स हैं वो कम फर्स्ट in order to in comparison to human. The ancient inheritance of tropical forests is constantly wearing away at the rate of 40 to 50% per acres. कर लिया. Also the burning of cow dung is preventing soil with to become natural fertilizer. To meet the need for fuel wood demand, there is a need to increase the rate of forest plantation by five-fold by the year 2020. We are losing the forest closer to an acre and a half of second, according to James Pitt, president of World Resources Institution. Now, जो James Pitt है, the president of the World Resources Institute, said the other day, we are saying that we are losing the forest at an acre a second, but is much closer to an acre and half of a second. जो चिल्ड्रन जेम्स पिट है, वो क्या बोलते हैं, जो कि प्रेसिडेंट है कहाँ के, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, उन्होंने बोला वी आर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड. हम क्या बोल रहे हैं कि एक एकड़ कितना, एक एकड़ एक सेकेंड में हम लूज़ कर रहे हैं, जो कि हम गलत बोल रहे हैं. बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़. ठीक है, विद हाफ अ सेकेंड. तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, हम एक एकड़ कितने कर रहे हैं, हाफ अ सेकेंड में लूज़ कर रहे हैं. ओके, हु सेड इट, जेम्स पिथ ने ये बात बोली है. आ गया समझ में.
ठीक है, and a half to a second. Got it? Now let's move to the next. Article 484, sorry, 48A. Article 48A, the Constitution of India. The Constitution of India provides that the state shall endeavor, ठीक है, endeavor means trying hard to achieve something, to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife in the country. तो जो आर्टिकल हमारा 48A क्या बोलता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, ये बोलता है कि जो जो स्टेट है शैल एंडेवर मीन्स ट्राइंग हार्ड टू अचीव समथिंग, to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of country. ठीक है, तो हमारा क्या है, स्टेट क्या करेगा, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगा, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है. बट व्हाट कॉजेज एनलेस एंग्विश, एंग्विश मीन्स पेन एंड सफरिंग, हियर वी हैव पेन, राइट, इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉट इन्फोर्स्ड इन इंडिया. ठीक है, तो बोलते हैं कि हालांकि ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बनाए गए हैं, पर क्या है, कोई तो चेंज नहीं आ रहा है, बट कौन फॉलो करता है. बट द पेनफुल फैक्ट इज दैट द लॉ आर नॉट फॉलोड इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर इंस्टेंस the constitution says that casteism, untouchability and bond labor shall be abolished. तो उसने बोला है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जो क्या है चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर है, ठीक है, वो सब खत्म होगी. बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हालांकि ये अबॉलिश हो चुके हैं, बट ये आज तक ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेलिंग है. A recent report of our Parliament's Estimation Committee has highlighted the near catastrophic depletion. ठीक है, एक catastrophic depletion means a harmful reduction in number of something of India's forest over the last 4 decades. तो एक recent report ने हमें बताई है कि इंडिया की जो क्या है फॉरेस्ट है वो डिप्लीट हो रही है in last 4 decades. ठीक है, now let's move. Sorry, India, according to a reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Largely areas officially designated as forest land are already virtual treeless. ठीक है, जो एरियाज को हमने ट्री डेजिग्नेटेड क्या बोला गया है कि ये क्या है, ट्रीज है, राइट, वो क्या हो रहे हैं, वो वर्चुअली ट्री रेस हैं. अकॉर्डिंग टू 3-year स्टडी कंडक्टेड बाय यूएन using satellites and aerial photography, and environment has got so bad in 8 years, right. थ्री स्टडी बोला गया, कैटास्ट्रोपिक बोला गया, जिसको कैटास्ट्रोपिक मतलब डिप्लीशन मतलब अ हार्मफुल रिडक्शन इन अ नंबर ऑफ समथिंग. ठीक है, now over the last 4 decades India is losing forest at a harmful rate of 3.7 million acres a year as per the report of Parliament Estimated Committee. ठीक है, हर साल क्या कर रहा है, 3.7 मिलियन एकड़ खत्म हो रहे हैं. ठीक है, द लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट इज नाउ ट्रीलेस. ठीक है, वर्चुअली ट्री रेस्ट है एक लार्ज एरियाज. ठीक है, and the actual loss is estimated to be the 8 times the rate given by government statistics. बोल रहे कि ये जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स है ना, कि ये इतना रेट है, ये गलत है, इससे कई ज़्यादा 8 गुना ज़्यादा तो क्या कर रहे हैं हम ये चीज़ें लूज़ कर रहे हैं. आर यू क्लियर विद इट? नाउ नेक्स्ट move to the third paragraph. A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by UN, ठीक है, warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigation. तो क्या है, according to the 3-year study conducted by UN, ठीक है, UN ने एक स्टडी करी कई, ठीक है, कहाँ से, यूजिंग सैटेलाइट या सैटेलाइट के थ्रू, जैसे हमारी वो दिखती है, एंड एरियल फोटोग्राफी हमारी अर्थ दिखती है. वॉन्ट्स दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डिटोरेटेड, डिप्लीटेड
warns the environment has deteriorated so badly that it is critical, very serious in many of the 88 countries investigated. 88 कंट्रीज़ ऐसे इन्वेस्टिगेट करते करते पता चला है कि हमारे जो फॉरेस्ट्स हैं वो क्या हो गए, डिप्लीट हो गए, हमारी जो इन्वायरमेंट है वो डिप्लीट होती जा रही है. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. ठीक है, distorting means deform या disfigure. तो सबसे बड़ा जो there can be no doubt उसने बोला है that the growth of world population is one of the strongest क्या बोलते हैं फैक्टर, क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो हमारी फ्यूचर को ख़राब कर रहा है. That was the world population around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added, and the 20 billion, 3.7 billion. The present world population is estimated 5.7 billion. Every 4 days, the world population increased by 1 million. Simple उसने एक चीज़ बोली. अब तुम देखो, उन्होंने बोला है जब हम 1800s में थे, सॉरी चिल्ड्रन, जब हम 1800s में थे तो उस समय 1 बिलियन की पर क्या हुआ था, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई थी. अब नेक्स्ट क्या हुआ, जब हम 1900 में आए 100 साल बाद, तो हमारे कितने बिलियन हुए, सेकेंड बिलियन वॉज एडेड, दैट मीन्स 2 बिलियन, है ना, सेकेंड बिलियन वॉज एडेड उसने बोला है. नाउ इन द 20th सेंचुरी, उसने बोला इन द 20th सेंचुरी 3.7 बिलियन इज एडेड. तो इन सब का टोटल कितना, इन सब का टोटल होता है 5.7 बिलियन. ठीक है, 5.7 बिलियन इन सब का टोटल होता है. ठीक है, नाउ वो बोल रहा है अब हर 4 दिन में हमारी पॉपुलेशन 1 मिलियन से इंक्रीज हुई रही हर 4 डेज में, जो कि 100 साल में था, अब वो क्या हो गया है, 4 दिन पर आ गया है. इतना तो हमारा इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल गो विथ फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस. ठीक है, उसने बोला जो फर्टिलिटी फॉल्स लाइक डेवलपमेंट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ओवर पॉपुलेशन डेवलपमेंट. ठीक है, दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट contraceptive, it is the best way. ठीक है, solution for overpopulation, but development itself may not be possible if the present increases in the number continues. उसने बोला development is the best possible solution for overpopulation. It can help in the reduction in fertility and rise in income and to spread more education and improvement in health. ठीक है, जो हमारी डेवलपमेंट है वही सबसे ज़्यादा हमें हेल्प कर सकती है. कैसे करके, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर हेल्थ. ठीक है, स्प्रेड ऑफ education, but if the number of population keep increasing it may not help in attaining any type of development. but इसी तरह से अगर हमारी क्या है, population increase होती रही चिल्ड्रन, तो क्या होगा, हमें क्या होगा, हमारी डेवलपमेंट रेट स्लो हो जाएगी. क्यों, क्योंकि स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है. द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बेगेट चिल्ड्रन. ठीक है, तो उसने बोला है बेगेट मीन्स गिव लाइफ टू. ठीक है, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर. कंडेम्स फाइंड्स गिल्टी ऑफ समथिंग. ठीक है, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर. More children does not mean more workers, merely more people without work. It is suggested that human beings be treated like cattle and compulsory sterilized, but there is no alternative to volunteer family planning without introducing an element of corrosion. The choice is really between the control of population and perpetual of population. उसने बोला as the richer is getting rich, यहाँ पर बोल रहा है ना, as the richer is getting rich the poor births children who are born to remain poor. ठीक है, तो पुअर क्या सोचते हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे
तो हमारा क्या होगा, हमारा इसमें प्रॉफिट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सैलरी काम करने को भेजेंगे. मोर पॉपुलेशन विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट. ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड, और फिर अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही चिल्ड्रन, तो जो हम ह्यूमन बींग्स है, वी विल बी ट्रीटेड एज हर्ड्स, वी विल बी ट्रीटेड एज कैटल्स who are sterilized by force, means make free from bacteria or microorganisms, sterilize. ठीक है. Then but to control the population, okay, it says to control the population some element of force has to be put. ठीक है, to control such population some force has to be put on family planning. Non-humans have to choose between population control or keeping up with poverty. ठीक है, the choice is really between. तो हमें choice करना है कि population control और keeping up with poverty कैसे करना है. ठीक है. Now the population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa and South America. वो तब की बात कर रहे हैं, 1994 की बात कर रहे हैं, वो तब की ये बात कर रहे हैं कि the population of India is estimated to be 920 million today and more than the entire population of Africa and South America put together. अब इंडिया की बात हो रही कि उनसे कई ज़्यादा है. कब से? 1994 में. ठीक है. नो वन familiar with the condition in India would doubt that hope of the people would die in their hunger hutments unless population control is giving the topmost priority. उससे सिंपल ये बोला है कि हमारी जो इंडिया पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है. If the population is not controlled, most of the people would die in their hutsmen, means huts. ठीक है. In the hutments mean in the huts they would die. Right? Who would die? People would die, population would die अगर कंट्रोल नहीं करा. with just a hope की उसमें. but with time people are now concerned for the survival of what planet. Now for the first time in the human history we see transcending concern. Transcending concern means a concern that existed for very long time and has passed down from one generation to another. ठीक है. Transcending means a concern that existed for very long time and has passed down from one generation. तो वो बोल रहा है कि अब लोग क्या हो गए, अवेयर हो चुके हैं. ठीक है. नाउ दे आर बीइंग अवेयर. ओके चिल्ड्रन. नाउ द सर्वाइवल नॉट जस्ट द पीपल बट ऑफ द प्लानट. उन्होंने बोले नहीं, हमें क्या है, सिर्फ लोगों का सर्वाइवल नहीं चाहिए. सॉरी, they are saying that we just do not want people survival, we want planet to get survive. We have begun to take a holistic view. Holistic view means thinking about all the factors. जितने भी factors हैं हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा. Of the very basis of our existence, the environment problem does not necessarily signal our demise. Demise means death. ठीक है. So it's saying that the environment problem does not necessarily signal our demise. It is a passport to the future. हमारा क्या है, ये passport है future के लिए. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. It is a holistic view. ठीक है. It is a holistic view. So we have now started to see our existence with comprehensive view. Solving environment problems are the passport of the future and should not be seen as the remark of our debt. We should see the world as a whole and not as a part. यहाँ पर बोल रहे हैं we should see the whole as our own responsibility. It is the holistic view and ecological view to see the world as integrated whole rather than disordered collection of parts. हमें क्या देखना है, अपने पूरे के पूरी कंट्री को एक पार्ट की तरह नहीं देखना, अलग अलग हिस्सों की तरह नहीं देखना है, बल्कि एक प्रॉपर पार्ट की तरफ देखना है. Okay. Now children, industry has most crucial role to play in the new era of responsibility. It says industry has most crucial.
ठीक है. Industries have the most crucial role to play in the new era of the responsibilities. What a transformation would be effective if more businessmen shared the viewpoint of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर. तो ये थे मिस्टर एडगर थे चिल्ड्रन, जो कि एक कंपनी डू पॉइंट में काम करते थे. उन्होंने क्या, सीईओ होता है ना, सीईओ बोलते हैं ना, तो उन्होंने अपने आप को, सीईओ का फुल क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है. तो उन्होंने बोला नहीं, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हूँ. Our continued existence as the leading manufacturer requires that we excel in environment performance. तो उन्होंने बोला our continued existing as the leading manufacturer requires that we are excelling in environmental performance. Okay, children. Now next, of all the statements made by Margaret Thatcher, ठीक है, during the years of her prime ministership, right, none has passed so deceivably into the current coin of English usage as her felicitous word, felicitous, clear and well chosen words. ठीक है. No generation has a freehold of the earth, on this earth. Freehold on this earth means permanent tenure or land or property. She says that no person has a permanent tenure of land or property on this earth. All we have is a life tenancy. All we have is a life tenancy means possessions of the land. ठीक है, सिर्फ हम उसको possess कर रहे हैं, हमारा पूरा नहीं हुआ है वो. With full repairing lease. With full repairing lease. In other words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers. Forefathers, जो members from the past generation, we have borrowed it from our children. So we have borrowed it our children. So when Margaret Thatcher ने क्या बोला है, was the prime minister, her own statement, which was so well chosen, she said that no human being on the earth holds a permanent tenure. कोई permanent नहीं है यहाँ पर, कोई permanent tenure नहीं लिखते हैं. We have life possessions and a full repairing lease. According to Mr. Lester, we have borrowed the earth from our children. Okay, children. Now, I hope you got the whole chapter. It is only based on the environment, only on environment. Okay. Now, this is written by Nani Palkiwala. Thank you, children. Thank you so much.